कल हमने स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रही थी अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट रीजन्स के हवाले से. टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स मेजर फंक्शन which is oxidative metabolism, or in simple words we can say that production of ATP using the mitochondrial machinery. Before going into detail of the process, we need to talk about the raw material that is required for the functioning of mitochondria. हमारा ये जो लेक्चर है इसकी जो है वो आप देख लें कि हम इसको इस तरह से बात करेंगे. पहले रॉ मटेरियल फ्रॉम वेयर इट कम्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. देन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन ऑफ एटीपी जनरेशन. And then we will talk about the process how the ATPs are going to generate. So the first component of today's lecture is going to be the supply of the raw material. Biochemistry में आपने जो different metabolic cycles पढ़े होंगे, glycolysis और Krebs cycle या TCA जिसे कहा जाता है, which is the process through which glucose is metabolized completely. These chemical pathways are basically the ways from where the raw material for this energy production is going to be provided. If you can think about the major reactions, मैं जो है detailed reactions की बात नहीं करूँगा because our concept is not to talk about the reactions of glycolysis or Krebs cycle. We are focused on those reactions and how many are those reactions where the oxidation or reduction occurs, and the raw material for this electron transport chain is going to be synthesized. This is the major line of major reactions of the glycolysis which takes place. You remember that 2 ATPs are consumed in the first half of this pathway, and then when glucose is split into 2-3 carbon molecules, then there is oxidation reduction reactions and ATPs are produced, and besides ATPs NADH is produced, that is produced at different reactions and leading to the end product of glycolysis, which is pyruvate. So the point of interest for us when we talk about ATP generation are those reactions where the oxidation and reduction takes place. कल हमने एक बात की थी कि प्लास्टिड्स में जो है प्रोसेस है फोटोफॉस्फोरिलेशन का और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का. द ओनली डिफरेंस इन दीज टू इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो है एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से which comes up from the NADH और FADH2, जबकि प्लास्टिड में जो है फॉस्फोरिलेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है दैट कम्स फ्रॉम द सनलाइट. सो दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज बोथ आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन ऑफ phosphorylation. So when we talk about glycolysis, so we are going to get NADH. Now keep in mind जब हम इसकी जो है बायोएनर्जेटिक्स के हवाले से बात करते हैं that how many ATPs are going to be produced for each NADH, or how many ATPs are going to be produced from each FADH, then we have to calculate the input ATPs and then output ATPs of all these reactions. So in order to go for this calculation, we need to have a count of these NADH which are produced during these metabolic pathways. Then besides this pyruvate, besides this glycolysis, if you remember, कल हमने जो है बात की थी fatty acid cycle की, that is also an other cycle which provides the acetyl coenzyme A for Krebs cycle interaction. When we come to this like fatty acid or Krebs cycle, then this is not only the glycolysis or glucose as a feeding pathway for Krebs cycle here. Krebs cycle is also known as TCA cycle for your information.
TCA साइकिल में जो है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म फैटी एसिड से भी आता है. Then protein metabolism, if you can look at alanine, cysteine, glycine, serine, threonine, these amino acids, when they are metabolized into pyruvate and it goes to acetyl coenzyme A. फिर एक और सेट है अमीनो एसिड का that is directly converted into acetoacetyl coenzyme A. This set of amino acid is directly converted into acetyl coenzyme A. Some amino acids they cannot be converted into acetyl coenzyme A. They are converted into glutamate, and then this glutamate enters to alpha ketoglutarate. And here we have some amino acid which enter to succinyl coenzyme A or fumarate or oxaloacetate. The point to tell here is that whatever nutrient is present, whether this is carbohydrate, source is glucose or any other carbohydrate, then fatty acids or protein metabolites, the ultimate end product or cycle is going to be the entry into the TCA cycle in the mitochondria, as a result of which we will be getting the NADH or FADH2, and these NADH and FADH2 are going to be the raw materials for functioning of the electron transport chain. This picture is basically this Krebs cycle or TCA cycle, and it highlights only those reactions where we have this oxidation and reduction. NADH is produced, FADH is produced, and then they are going to go to hand over the electron to electron transport chain. Within Krebs cycle, there are five such places which are involved in this kind of activity. One जी इनमें से फोर जो हैं they come from within the tricarboxylic acid or Krebs cycle pathway, and one is the one which comes out of this cycle, that is when pyruvate is converted into oxaloacetate. Once you get this raw material NADH and FADH, then we proceed further how actually the work is done. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, otherwise then we proceed further about their importance of these coenzymes. सर इससे पिछली स्लाइड में जो आपने बताया वो रिपीट कर दें काइंडली. जी, इसमें मैंने ये बताया है कि Krebs साइकिल के अलावा भी जो है हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज मौजूद हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और उनके लिए जो है देर इज नो स्पेसिफिक सेपरेट मेटाबॉलिक साइकिल. फैटी एसिड्स के लिए फैटी एसिड साइकिल है, इनका जो है फैटी एसिड साइकिल का बाई प्रोडक्ट जो है दैट कैन गो टू दिस TCA like in the form of acetyl coenzyme A. और अगर प्रोटीन्स को आप लें, प्रोटीन्स में डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, ये उनका मेटाबॉलिक वे शो किया हुआ है फ्रॉम विच रूट दीज अमीनो एसिड कैन बी पार्ट ऑफ दिस Krebs साइकिल. और जब Krebs साइकिल की जो है वो प्रोसेसिंग होगी, Krebs साइकिल में इन मेटाबोलाइट्स की प्रोसेसिंग होगी, देन what actually is going to happen, and this is this picture which shows that there are five such reactions which are oxidation reduction reaction where the NADH or FADH is produced. We are concentrating on NADH or FADH because these are the raw materials which will be used for the functioning of electron transport chain. And as a result of functioning of electron transport chain, we will be producing the ATPs. Is clear? Yes, sir. Okay. So before we talk about the process itself, we have to talk about the importance of these coenzymes. हमने ये तो बात कर ली कि NADH प्रोड्यूस हुआ और FADH2 प्रोड्यूस हुआ. अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ही आएंगे, then what is going to happen? That NAD is going to be separated from hydrogen, and hydrogen, as you know, has electrons and protons. The electrons from this hydrogen will be handed over to the electron transport chain, leaving behind these protons here. Now these protons
are not going to stay in the mitochondrial matrix. So keep in mind, this side is mitochondrial matrix, this is the inner mitochondrial membrane, and this side is the peripheral space. So those steps में अगर हम बात करेंगे that what actually is going to happen, that NADH है या FADH2 है, the primary or the first function is going to be that protons are going to be separated, electrons are going to be handed over to electron transport chain. Ultimately, we can say that these coenzymes are now oxidized and they are separated. Protons are in the matrix, electrons are handed over to electron transport chain. As soon as the protons are in the matrix, they don't stay in the matrix, rather they cross these electron transport chain complexes, अभी आगे चल के बात करेंगे, and they enter into the peripheral space. अब अगर peripheral space में आप देखें concentration gradient के हिसाब से, protons are higher on the peripheral space side, whereas they are very few on the matrix side. Ultimately, this disbalance of proton concentration as well as this disbalance of positive charge creates a potential or electromagnetic gradient. Now, if this is the membrane, if you look at this point, this is the membrane. All the positive charges are on one side of the membrane and all the negative charges are on other side of the membrane. Negative charges are because of the hydroxyl ions which are also present in the matrix due to splitting of the water molecule. So besides these positive ions, if we look at the pH point of view, all the protons are on one side, all the hydroxyls are on other side. So we can say that the membrane gradient is produced, which is electrochemical gradient. One is electrical gradient and the second one is pH gradient. So these two gradients collectively they build up a force which is called as PMF, proton motive force. This force is responsible to push back these protons to the matrix. यहाँ तक बात क्लियर है जी? सर एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स का बता दें. नो इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स. अभी मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि व्हाट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स. सो पॉइंट यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट ऑल द प्रोटॉन्स आर ऑन the side of the membrane, that is peripheral space, that causes the electrical gradient and pH gradient. Now both of these gradients they cause a proton motive force. This proton motive force will try to push these protons back to the matrix, but this part of the membrane, inner mitochondrial membrane, is impermeable for reverse entry of the protons. Protons can only go back to the matrix from one point which we call as F1 particle. ये बात clear है? So transfer to the peripheral space from the electron transport chain to the complexes. अभी मैं इसकी बात करूंगा आगे चल के. And coming back to the matrix is from F1 particle. So this PMF is going to push the protons back to the matrix through this F1 particle, and this is the point when protons they move back to the matrix, then the phosphorylation occurs and ADP is converted into ATP. इस कंप्लीट मैकेनिज्म को अगर हम नाम देंगे तो दिस इज केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म which is because of these protons which is going to produce the ATPs in on the F1 particle. Now coming to electron transport chain. अभी मैंने सिंपल एक प्रोसेस की बात की है that how the gradients are produced. Electron transport chain के ऊपर as you know there are different proteins and different cytochromes. If we look at the electron transport chain, we have the flavoproteins, cytochromes, copper atoms, coenzyme Q or ubiquinone, and iron sulfur proteins. These are the components of any electron transport chain. लेकिन हम इनको जो है वो separately जो है study नहीं करते.
माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। इरम अपना माइक ऑफ करें, इरम। जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते, रादर वी स्टडी देम एज अ ग्रुप, and there are four groups which we name as complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. These are multi-protein complexes जिनमें आयरन सल्फर सेंटर्स भी होंगे, जिनमें फ्लेवोप्रोटीन भी होगी और जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स भी होंगी। इन फोर कॉम्प्लेक्सेस के अलावा हमारे पास दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम साइटोक्रोम सी और यूबिक्विनोन कहते हैं। यूबिक्विनोन जो है दिस इज प्रेजेंट एज डिसॉल्व्ड इन द लिपिड बाइलेयर, अभी आगे चल के मैं दिखाता हूँ इसको। और साइटोक्रोम सी जो है दैट इज प्रेजेंट एज अ प्रोटीन टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक जो है शटल के तौर पे काम करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पकड़े और दूसरे कॉम्प्लेक्स तक वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं। Now, if you look at this picture, दिस इज फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर सेंटर, और इसको कॉम्प्लेक्स 1 का नाम दिया गया। कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के दरमियान जो शटल का काम करता है वो यूबिक्विनोन करता है या साइटोक्रोम क्यू करता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 2 जो है दैट इज फ्लेवन एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, इसमें भी आयरन सल्फर सेंटर यहाँ पे मौजूद है। इट ऑल्सो हैंड्स ओवर इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम क्यू और यूबिक्विनोन। देन दिस complex 3 is composed of cytochrome B and cytochrome C1 and some proteins which have iron sulfur center. The electrons are handed over to cytochrome B. From here goes to cytochrome C1. cytochrome C1 से ये चले जाते हैं cytochrome C के पास। अब cytochrome C आप देख सकते हैं यहाँ पे, this is more towards intermembranous space. This is not like fused or embedded in the double lipid bilayer. Rather it moves towards more towards intermembranous space, and these electrons are handed over to complex 4. अब complex 4 में अगर देखें, the electrons are basically handed over to copper, and then from copper they go to cytochrome A, cytochrome A3, and again to copper, and ultimately they are taken up by the oxygen to make up the water molecule. So this is the flow of electrons to the through the electron transport chain. Now, if you have any question up till this point, ask. Otherwise, I'm going to proceed further. Okay. So now the interaction of NADH here and FADH here. NADH is produced in glycolysis. It is produced in Krebs cycle. It comes to complex 1 और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यू कैन ट्रेस द इलेक्ट्रॉन फ्लो with these red dotted arrows, and the protons, 4 protons, they cross the complex 1 and then they go to intermembranous space. As soon as flow of electron keeps on going, protons, they keeps on moving out towards the intermembranous space from complex 1, complex 3 and complex 4. जहाँ तक कॉम्प्लेक्स 2 की बात है, दिस इज द साइट जहाँ पे FADH2 के जो है इलेक्ट्रॉन्स, FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स हैंड ओवर होते हैं टू कोएंजाइम Q। अब कोएंजाइम Q से डायरेक्टली जो है वो प्रोटॉन जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट। If you look at complex 2 shape or arrangement, this is associated more towards the metric side. और एक चीज क्लियर कर लें कि NADH is freely moving
in the mitochondrial matrix, FADH2 is not freely moving. Rather, this is embedded in the inner mitochondrial membrane और जो Krebs cycle का reaction है succinate से fumarate तक conversion जो है that basically takes place by interaction of this particular point with FADH2, and in this way 10 protons they move towards the intermembranous space. As a result, there is positive charge towards the intermembranous space, there is negative charge towards the matrix side, and this is the electrochemical gradient which creates the proton motive force, which leads to the movement of translocation of protons back to the matrix. अब अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये पिक्चर शो करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। यहाँ पे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम क्यू, फिर FADH2 से कोएंजाइम क्यू, और मेजर स्टेप वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। Then from coenzyme Q to cytochrome B, cytochrome C1. From cytochrome C1, it is handed over to C. This is the second step where extensive energy is released. And then cytochrome C says cytochrome A, and from cytochrome A, it is handed over to molecular oxygen. This is the third point where the energy, major amount of energy is released. These protons, which are now present in the peripheral space, they have to come back. And as I earlier mentioned, कि जो mitochondrial membrane है, inner membrane, that is impermeable for the protons except from those points where this F1 particle is present. So this is inner mitochondrial membrane, and this structure shows the F1 particle. Before going into its functional detail, let's look at its structure. आप इसको knob-like structure भी कहते हैं. अगर इसको मैं इसकी position में observe करूं, it has a mushroom-like shape. Mushroom का एक जो head है, that is towards the that mitochondrial matrix, and then there is one stalk which is connecting the mushroom head with the basal membrane or basal protein. This basal protein is embedded in the inner mitochondrial membrane. अब इस F1 पार्टिकल को सिंपली दो कंपोनेंट में तकसीम किया जा सकता है. The knob-like structure is called as F1 particle, and that component which is embedded in the membrane, inner mitochondrial membrane, is called as F0 or F0 portion, and these two are connected by a stalk. जी यहाँ तक बात क्लियर है जी? यस सर. इस ATP इस F1 पार्टिकल को हम इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से नाम देते हैं ATP सिंथेज का, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का मैंने आपको बता दिया. देयर आर अराउंड roughly 15,000 F1 particles in a mammalian liver cell. If now we look at the composition of F1 particle, it is a multi-protein complex. It has 3 alpha subunit, 3 beta subunit, 1 gamma subunit, 1 epsilon subunit, and 1 sigma subunit. Now you can see here, this is alpha, beta, alpha, beta, alpha, and beta. Means alpha and beta subunits, they are alternating with one another. Gamma subunit is present in the center as a stalk. आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक अम्ब्रेला को ओपन किया हुआ है. जो अम्ब्रेला का हैंडल है विच इज इन द सेंटर, दैट इज गैमा सब यूनिट, और जो एक अम्ब्रेला शेप बनी हुई है या मशरूम शेप बनी हुई है, उसमें आपके पास अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं. और गैमा सब यूनिट इज सपोर्टेड बाय एप्सिलॉन सब यूनिट ऑन वन साइड. On the other hand, sigma subunit is responsible for attachment of this mushroom head with the F0 to another protein which is known as B protein.
This B protein is basically part of the F0 particle. F0 particle is made up of by three types of proteins named as A protein, B protein and C protein. ए का एक ही मॉलिक्यूल होता है, बी के दो मॉलिक्यूल्स हैं और सी के इसमें 10 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. Now these F naught particles, they basically are directly connected with the F1 particle through stalk on one side and on the other side through this beta protein. Now if I take a look from the top of this F1 particle, this central stalk is gamma protein. This लाइट ब्लू और फिरोजी कलर में जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पे ओ लिखा हुआ है, this is one binding site that has alpha and beta subunit. This red color is second binding site. It also has an alpha and beta subunit. The third one is also a site which has an alpha and beta subunit. This is when we look from the top of F1 particle. Now the question comes how this F1 particle works for ATP formation. We have seen that the protons are going to pass through this F1 particle and then phosphorylation is going to take place. This happens by a mechanism which is called as binding change mechanism. Normally आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम जो है वो जब रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट के ऊपर टारगेट करता है whether this is going to make a bond or this is going to break a bond, एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और एनर्जी इज गोइंग टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी इज फ्रॉम द सेल. एटीपी हाइड्रोलिसिस हो सकती है या कोई और जो है सोर्स हो सकता है, बट एनर्जी इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड. यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो फंक्शनिंग डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एटीपीज और एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप एटीपी कंज्यूम करवाएंगे देन देयर इज नो यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्शंस. तो अल्टीमेटली नेचर ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म यहाँ पे इवॉल्व किया है जिसमें एटीपीज आर नॉट यूज्ड बट एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड. फॉर दैट पर्पस the energy which is released by the movement of protons is not used to derive the phosphorylation. Rather, this is going to happen by some rotational catalysis. अब rotational catalysis क्या है या catalysis क्या है? rotational catalysis जो है उसके लिए I hope आपने ये वीडियो देखी है, but I again want you to now focus at this video. Just 1 second. Let me play this. Focus on this F0 particle जो कि रोटेशन शो कर रहा है. इसके ऊपर फोकस कीजिए, फिर मैं लेफ्ट साइड वाली पिक्चर के ऊपर आऊंगा. So you have seen that how this rotational catalysis is achieved. This lower part of F naught particle, F0 particle, which is embedded in the inner mitochondrial membrane, this is the place where the proton enters from one point and then it crosses along this whole circle or the molecule of the protein, 10 C proteins, and then it comes out from here. अब इस पूरी जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में व्हाट हैपेंस,
द सेम थिंग हैपन्स अगर आपने कभी विंड मिल देखी हो कि नीचे पानी कैसे जो है वो एक फ्लैप्स को हिट करता है और वो फ्लैप्स की वजह से जो है टरबाइन रोटेट करती है. So these hydrogens are basically going to pass through this C protein rings, सब यूनिट्स को हिट करेगा और ये सब यूनिट्स जो हैं फिर ग्रेजुअली रोटेट करेंगे और अदर साइड के ऊपर जो प्रोटॉन वो बाहर आ रहा है and then that proton is actually coming towards the cytosolic side. Now the protons from intermembranous space they enter through this C ring. It crosses the C ring and it enters into the cytosolic side. In this movement or in this process of transfer, rotation of the C ring occurs. That rotation causes the rotation of the central gamma protein. Ultimately, gamma protein is going to give a rotation to the F1 particle, and that F1 particle is going to phosphorylate the or is going to link the ADP with inorganic phosphate which is attached with these catalytic sites. I'm coming back to this picture. This has been seen कि ये जो F1 पार्टिकल है इसके जो तीन अल्फा तीन बीटा सब यूनिट्स हैं उनको हम पेयर की शक्ल में अगर अरेंज करें देन वी कैन आइडेंटिफाई थ्री बाइंडिंग साइट्स और तीनों बाइंडिंग साइट एट एनी गिवन टाइम they are not at the same stage of chemical composition or chemical reactivity. One site is referred as O, that means open. It has nothing attached with it and it is ready to welcome ADP and inorganic phosphate. As soon as proton moves, some of the proton comes back to the inner membranous space. ADP, inorganic phosphate, they get loosely attached with the O position. O stands for open. Then these two molecules are attached with the catalytic site. This condition is now referred as L position. L stands for loose. Another movement of protons from membrane space to matrix. It causes the rotation. That rotation leads to spontaneous ATP formation के inorganic phosphate ने जो एक bond है वो ADP के साथ बना लिया है. Now this is converted into ATP. Now the third step जो प्रोटॉन की मूवमेंट होगी इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट एनर्जी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द कैटालिटिक अटैचमेंट और फॉस्फोरिलेशन. Rather, this energy is going to be used to separate this ATP from the site of attachment because this attachment of ATP is quite strong as compared to when it was in the form of ADP and inorganic phosphate. So ultimately, this energy is going to separate the ATP back into the matrix, and again, this O site is available to house these ADP and inorganic phosphate. अब अगर complete F1 पार्टिकल को देखें, अगर एक कैटालिटिक साइट O पोजीशन पे है तो दूसरी कैटालिटिक साइट L पोजीशन पे होगी, तीसरी कैटालिटिक साइट T पोजीशन पे होगी. इन दिस वे अगर ये O जो है साइट ये L साइट में ट्रांजिट कर गई है देन दिस L साइट विल ट्रांजिट इनटू T साइट एंड दिस T साइट विल ट्रांजिट इनटू O साइट. नेक्स्ट स्टेप में ये L साइट जो है ये T में ट्रांजिट कर गई है, ये O में ट्रांजिट कर जाएगी, ये L में ट्रांजिट कर जाएगी. Then we can say simply say that during the course of oxidative phosphorylation on F1 particle, every catalytic site spontaneously passes from O site to L conformation to T conformation, it goes back to O conformation. And during this change of conformation, the ATPs are generated by binding the inorganic phosphate with ADP. And this video you have seen, इसमें से अगर क्वेश्चन है तो मैं अभी ले लेता हूँ. This is the last slide which summarizes each and everything. What actually is happening in the mitochondria. That inorganic phosphate is required for phosphorylation. It is going to enter into the mitochondria.
Protons, they are going to enter into the mitochondria. Pyruvate as a raw material for TCA, Krebs cycle, it is going to enter into the mitochondria. ADP, adenosine diphosphate, which has to be converted into triphosphate, is going to enter into mitochondria. And then everything is going to take its role, like this pyruvate is entering into Krebs cycle. This inorganic phosphate or protons, they are going to come, a proton is going to come and interact with the electron transport chain. Proton, they are moving towards the peripheral space. They are coming back to the matrix through ATP synthase, जिसको F1 particle का नाम दिया गया, and then ATPs are produced, and then these ATPs, they are going out of the mitochondria. So keep in mind one thing, the mitochondrial membrane or the ATPs which are produced, they are not only the sole function of the mitochondria, बल्कि अगर इसको देखा जाए, mitochondria has to perform other functions as well. और वो functions क्या हैं? To to transfer all these materials required by the mitochondria inside of the mitochondria at the expense of, और barter system इसको कह लीजिए, ATP को और protons को ये रिलीज करेंगे और बाकी मटेरियल जो है वो इनके बदले माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा. In this way, the electron transport chain is going to perform its function using raw material of NADH and FADH as a source of proton, source of electron. They are going to create the ATPs. And the last point over here, if you have ever heard about cyanide, copper sulfate, cyanide कभी सुना है? क्या होता है? ये सर ये पॉइजनस होता है और इससे डेथ हो पॉइजनस जाती होता है. है, डेथ हो जाती है और बिटर इमीडिएट डेथ होती है. बिटर आलमंड जैसी सर इसकी फ्रेग्रेंस होती है, शायद कड़वे बादाम जैसी. मैंने कभी जो है वो स्मेल नहीं किया इसको, ना ही कभी पढ़ा है. मैंने सुना द है. पॉइंट आपने सुना, ठीक. यस अब सर. पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. इफ you if somebody takes the cyanide, it causes immediate death. और डेथ क्यों होती है कि जब द पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग और सफोकेशन हो जाती है, where actually the cyanide is going to target. जब cyanide यूज करते हैं ना, that comes and that interacts with complex 4 में जो कॉपर आयंस है ना, इनके साथ इंटरेक्ट करता है. अब जब कॉपर आयन के साथ इंटरेक्ट किया उसने, they are no more available as part of the electron transport chain. As a result, what will happen? When your electron transport chain is disrupted, flow of electron is stopped. जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, साइटोक्रोम सी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा था, और एंड के ऊपर यहाँ पे आपके पास वाटर बन रहा था, और दूसरी तरफ जो है वो प्रोटॉन्स जो हैं वो एटीपी सिंथेस के थ्रू होते हुए एटीपी बना रहे थे. When electron transport chain stops passing the electrons, जो साइटोक्रोम जिस स्टेज में है, अगर ऑक्सीडाइज्ड है वो ऑक्सीडाइज्ड रह गया, अगर रिड्यूस्ड है वो रिड्यूस्ड रह गया, बिकॉज जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो पेरिफेरल स्पेस में प्रोटॉन नहीं जाएगा. प्रोटॉन नहीं जाएगा तो वो जो फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, वो जनरेट नहीं होगी और एटीपी नहीं बनेगा. और जब एटीपी नहीं बनेगा, इट विल कॉज इमीडिएट डेथ टू द सेल, बिकॉज फॉर एवरी सेलुलर एक्टिविटी वी नीड एटीपी. और अगर आप मसल के बारे में सोचें, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, यू माइट हैव स्टडीड इन फिजियोलॉजी, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, दैट नीड्स एटीपी. मायोसिन हेड के साथ उसने अटैच होना होता है एटीपी ने. एंड व्हेन in the diaphragm is a muscular layer which separates the respiratory cavity and abdominal cavity. और contraction और relaxation जो है diaphragm की, that is basically responsible that you breathe. अगर उसकी contraction आप diaphragm की बंद कर दें,
you are unable to breathe and death will occur.